Okay, it's that simple. So the session, this coaching session goes as, you know, whatever you bring. Okay, so briefly, ये जो जो हम कोचिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें इस चंद, you know, बेसिक चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा. एक चीज ये कि, you know, realizing कि हम लोग we live इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी. आज की हमारी जो दुनिया है, you know, बहुत साल पहले, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी और उसके अंदर एक छोटा सा सेंटेंस था, but that sentence actually made so much sense and I think it is true until this time in my life, and that is we all live in information age and there is information overload. But think about this, when we say information, okay, that information is in what form? If you think of it, information comes in various forms, but there is nothing tangible in that sense. You know, when we say information जो है, ये एक मादी चीज नहीं है, गैर मादी चीज है. इसका कोई वजूद, मादी वजूद नहीं है, बल्कि हर मादी चीज के बारे में we have some information जो कि गैर मादी चीज है. So अगर हम उस गैर मादी चीज को कोई नाम देना चाहें, अगर हम उसको समझना चाहें, so for example, हम लोग वी आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट और इस वक्त इंफॉर्मेशन का, you know, तबादला हो रहा है मेरे और आपके दरमियान, मेरे और आपके कंप्यूटर के दरमियान, मेरे और इस कंप्यूटर के जिस नेटवर्क से मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है उसके दरमियान, और आपका नेटवर्क से जिस कनेक्टेड है, और वो दो नेटवर्क्स जो आपस में कनेक्टेड है, एंड देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसफर्ड. अब वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जा रही है? वो इंफॉर्मेशन हम से जी वाइब्रेशंस की फॉर्म में है, रेडिएशंस की फॉर्म में, और अगर हम बिल्कुल मुख्तसरन सिंपल सी बात करें तो वो इंफॉर्मेशन एनर्जी की फॉर्म में. सो you know, it's like जिसे हम कह रहे हैं information, it's all in the form of some form of energy. There is energy all around us, there is energy inside us, there is energy outside us. So we live in that sea of energy. Okay, or so information, there is so much information. Now अब जब हम डिसीजन मेकिंग के हवाले से बात करते हैं, जिसमें हम अभी आते हैं, एक एस्पेक्ट और है. अब ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन की किस एस्पेक्ट की मुझको या आपको आगाही है, आपकी मेरी अवेयरनेस इस इंफॉर्मेशन की किस एस्पेक्ट से. सो फॉर एग्जांपल, अभी हमारी जो कम्युनिकेशन चल रही है, सो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो शऊर है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय जो इस वक्त हमारा, यू नो, इट्स लाइक यू आर लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग, यू आर वाचिंग मी probably on your screens, and maybe even if you are watching a recording of this, okay, and but जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस वक्त, ये मेरे और, यू नो, या मेरी इस वीडियो के और आपके दरमियान हो रही है, लेकिन there's some lot of information जो कि इस, you know, इस कंप्यूटर के और आपके कंप्यूटर के और जैसे मैंने कि नेटवर्क्स के दरमियान, you know, जिसका तबादला मुसलसल हो रहा है. मगर मेरा और आपका शऊर, मेरी और आपकी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस जो है, वो सिर्फ इस हद तक महदूद है कि जो हमारी आपस में इंटरेक्शन हो रही है. ओके, एंड वी आर नॉट इवन concerned and not consciously aware of कि इन कंप्यूटर्स के दरमियान, इस नेटवर्क के दरमियान जो इंफॉर्मेशन का तबादला हो रहा है कॉन्स्टेंटली. लेकिन द फैक्ट इज, अगर वो तबादला नहीं हो रहा हो, वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद दिस सेशन. ओके, सो इन फैक्ट माय कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू वाईफाई, और वाईफाई डिवाइस उधर कोने में रखी हुई है, और उस डिवाइस के साथ देयर इज सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्स्टेंटली आ रही जा रही है, एंड you know, we are not concerned with that because that is not relevant to what I'm doing, even though it is very, very much relevant to what I'm doing, you know, but I'm thinking that it is not relevant, so I'm not paying attention to it. Okay, so because I'm thinking that I'm not paying attention, it's not relevant, I'm not thinking about it. But खुदा ना खास्ता अगर सिग्नल एकदम ड्रॉप हो, अगर फर्ज कीजिए कि वाईफाई अचानक बंद हो जाए, then my total attention will fall, instantly go to ये क्या हो गया. Okay, I'll instantly try to get some kind of connection because I want to carry on with this transmission that I'm conducting, or with this session that I'm conducting. So इसमें जो तीसरा aspect है, you know, it's consciousness या awareness के बाद जो तीसरी चीज है, that is what I'm thinking about at any given point in time. So जो तीन aspects है, इसमें पहली चीज, there is this information or what we call energy, और इसको फिर हम बहुत सारे मुख्तलिफ नाम देते हैं. कुछ ने इसको कहा यूनिवर्सल एनर्जी, कुछ ने कहा यूनिवर्सल इंटेलिजेंस. यू नो, आज के जमाने में वी कॉल दिस इंफॉर्मेशन एज है, तो हम इसको वी कॉल इट इंफॉर्मेशन, और वी कॉल इट, यू नो, एनर्जी टू बी मोर साइंटिफिक. एंड सम पीपल इवन कॉल इट माइंड. Okay, some people call it universal mind, whatever name you give it.
देन दूसरी चीज जो है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस इस इंफॉर्मेशन के किस एस्पेक्ट के बारे में, और तीसरी चीज जो है जैसे मैंने कहा थिंकिंग. सो एंड देन थिंकिंग के अंदर भी इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो ये देयर इज दिस लार्जर बिगर आइडिया दैट एग्जिस्ट्स, and the idea is कुछ लोगों ने कहा the bigger thought. Okay, so for example, health. अगर फर्ज कीजिए I have to make a decision about my health. Now I have some ideas about health. एक अच्छी हेल्थ कैसी होती है, अच्छी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, अच्छी हेल्थ के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मेरी एज के मुताबिक हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, इफ आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस तो मेरे लिए कौन सी एक्सरसाइजेस सूटेबल होंगी, कौन सी एक्सरसाइजेस सूटेबल नहीं होगी, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं विच कैन बी हेल्दी, कौन सी एक्टिविटीज हैं विच कैन बी अनहेल्दी फॉर मी, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि मैं पहले कर सकता था और मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि माई एज डज नॉट अलाउ, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं that I really want to do but for some reason I don't find enough motivation to do. So I have many different ideas, but all of those ideas are around the bigger idea of health, okay, or the bigger idea of relationships, or bigger idea of wealth, or bigger idea of any other thing. Okay, so वो जो different छोटे छोटे हमारे ideas हैं, that's what we call our thinking. So we have this bigger idea, in this example health, and then we have these smaller ideas about and these smaller ideas is what we call our thinking, what I'm thinking about, whatever I may be thinking. When it comes to making decisions, we have an idea कि मुझे अपनी जिंदगी में इस वक्त फलाने इशू है, and then वो इशू जो है that's the bigger thought. Okay, and then I have वो जो idea है, that's in form of some kind of energy, and now I'm aware of some aspect of that energy. I'm aware of if I use this idea, or if I move in this direction, those are the consequences. If I move in that direction, those are the consequences. And I'm just taking two examples, like as if there are just two, there can be multiple possibilities. I can move in this direction or that direction or this direction. There can be so many possibilities. But we have things like, let's say, just to make things simpler, like I can go in this direction or I can go in that direction. लेकिन मैं जिस direction में भी जाऊं, so there are some consequences. And the problem, in my personal experience and opinion, the problem happens जब वो consequence जो मेरे ख्याल में मेरे decision लेने के बारे में हो रहा है, उस consequence के बारे में I have a negative feeling, I have an unpleasant feeling, I have an undesirable feeling. And since my feeling is real, since it's something I can actually feel right now in my body, I'm feeling as if ye jo consequences and they're real. Okay. Now, as a result, I get stuck. I feel stuck. Okay. And when I say I means, human beings in general. So because there is this undesirable idea. Now, on the other hand, I say this is the decision. If I make this decision, if I move in this direction, ye jo consequences, this is desirable. Yet I'm not taking any action around this. I'm not making a decision about this. Why? Because apparently, iska mujhe ye result mil raha hai. Yet, somewhere in the back of my mind, I have this, after this, there is something which is negative, which is undesirable, which is something which I don't want. So as a result of, going in this direction, I'm expecting something which is undesirable, which is basically as good as that one. Okay, which is undesirable. So this one becomes undesirable for me. So I don't take action in this direction or in that direction. And as a result, the person feels like stuck. Okay, and stuck and unable to take action, unable to do whatever I want to. Okay, and unable to make a decision. Okay, so and then I say, oh, I'm so undecisive. But the fact is that the human brain constantly makes many decisions. In fact, the brain makes literally thousands of decisions. The brain makes literally thousands of decisions. So for example, so in order to move my hand, which muscles to engage? In order to move my neck, which muscles to engage? I'm not consciously thinking of it as a decision, but the fact is that
at some level, deep inside me, there is this decision making process going on all the time. But because I have an issue about which I'm conscious at this moment, I'm aware at the moment, and I'm not deciding, so I may end up putting a wrong identity on myself that I'm a poor decision maker, which actually is not true. I'm not making a decision about something because in the back of my mind, I have a consequence which I expect to be unpleasant in some way and which I do not want to experience. Okay, now that's one possibility. Now, let's say, what if both are, good consequences? This is also a desirable consequence, and that is also desirable. Now I'm indecisive whether I should go for this or that. Okay, so there is no bad feeling in that sense, but there is good feeling. ये भी है, ये भी है, and मगर मैं इसके लिए जाऊँ तो क्या, उसके लिए जाऊँ तो क्या? अब now again, the person gets into this thing. मैं इसका decide करूँ या उसका decide करूँ? It's like, because again, अब क्या हुआ आप और कीजिए. If I go for this one, even though it's pleasant, but there is this pain of losing that one. And if I go for this one, even though it's pleasant, but there is pain associated with the idea of losing that one. Okay, so there is this push-pull situation going on, okay, and causing the person to not make a decision and feel stuck or get confused. Okay,